हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं एडुकेमी में, जिसका मेन मोटो है स्टूडेंट्स थीम वाइज क्वेश्चंस करें, इसके साथ साथ जो भी टॉपिक का प्रिपेयर करते हैं उसको अटेम्प्ट करें। वी आर डिस्कसिंग द 45 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेम क्वेश्चन को आप एडुकेमी के पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द क्लास नोट्स ऑफ द एडुकेमी। जीएस के क्लास नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप वे भी गिवन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन जाकर पोर्टल पे अटेम्प्ट करें, जिससे आपको पता लगता है कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ये पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी वैसे हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया, तो आप उसको भी देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन इन्वॉल्व होता है? आंसर इज बी हियर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। Okay, so the answer of this question is B. Now let's come to the second question. The second question, with reference to the Indian public finance, consider the following statement. In Indian public finance, there are the four statements are given. External liabilities reported in the union budgets are based on the historical exchange rates. The continued high borrowing has kept the real interest rate high in the economy, and the upward trend in the ratio of the fiscal deficit of a GDP a recent year has adverse effect on the private investments. And the next is interest payment in the single largest component of the non-planned revenue expenditure of the union government. ये अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। नो, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, दीज आर बेस्ड ऑन द रियल एक्सचेंज रेट। जो मार्केट में अभी एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे ये होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। अगर हम ऑप्शन पे भी जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। So the answer of this question will be the C, 2, 3 and 4. So the answer is here 2, 3 and 4. Next question देखते हैं। Next question is, before going to next question, we are starting a prelim support program from the 11th of January 2024. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Components are given here. इसके लिए आप YouTube पे जाकर वीडियो भी देख सकते हैं रिलेटेड टू द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। एंड लास्ट ईयर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए थे इन द एग्जामिनेशन। इस प्रोग्राम के करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एज वेल एज आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाता है। एंड दीज आर द स्टूडेंट फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, which one of the following is correct about the fiscal responsibility and the budget management act of 2003? इसका स्पेसिफिकली कंसर्न क्या? अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी 4 बार पूछ चुके हैं यूपीएससी में। FRBM एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हैं FRBM एक्ट को। सो हाईएस्ट चांसेस कि आपके 2025 में भी ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपको बताना है। फिस्कल डेफिसिट ओनली पे फोकस करता है, रिवेन्यू डेफिसिट पे फोकस करता है। बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट पे फोकस करता है। नीदर फिस्कल एंड नो रिवेन्यू। लेट्स फोकस ऑन द बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड द रिवेन्यू डेफिसिट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंट्री इज सेड टू बी इन डेट ट्रैप। किसी भी कंट्री को डेट ट्रैप में कब बोला जाता है? It has to borrow the make interest payment on outstanding loans. No, it has abide by the conditionalities imposed by the International Monetary Fund. Yes, if it has abide by the conditionalities imposed by the International Monetary Fund, then the country is said to be in the debt trap. Like in the case of the Sri Lanka, the case of the some extent the Pakistan. So the answer of this question is B here. ऑप्शन नंबर सी, इट हैज बीन रिफ्यूज लोन फॉर एड बाय द क्रेडिट अब्रॉड। इसके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि रिफ्यूज किया जाए किसी भी कंट्री को लोन देने से। इसमें भी द इंटरनल कंडीशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कंट्री। सो थर्ड विल नॉट बी द आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। These are the definition you need to tell कि क्या क्या definition किससे मैच होगा। फिस्कल डेफिसिट, budget deficit, revenue deficit and the primary deficit. The fiscal deficit is the excess of the total expenditure over total receipt less borrowing.
Budget deficit is the excess of the total expenditure or the total receipt. Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over the revenue receipt, and the primary deficit is related to the excess of total expenditure over total receipt less borrowing. So the answer to this question is A. So you should remember all the definition related to the deficit. Either it's the fiscal deficit, budget deficit, revenue deficit, or the primary deficit. Now let's come to the next question, and we are also starting our CSET program. आप ज्वाइन कर सकते हैं CSET प्रोग्राम में. these are weekend based classes आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे होंगी for the 3 hours. स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन कि आप 5 दिन जीएस पे फोकस कर सकें, एंड लास्ट 2 days you can focus on the CSET. We are specifically focused on all the PYQs conducted till from 2013 to 2024. यूपीएससी सीसेट में भी ऑलमोस्ट 25% पेपर को रिपीट करता है, तो ये आपको जानना होगा हाउ दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चंस. तो वी आर डिस्कसिंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड एनालिसिस इन आवर क्लासरूम. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स what is the meaning of the fiscal deficit in the union budget? The sum of the budgetary deficit and net increase in the internal and external borrowing. The difference between the current expenditure and the current revenue, the sum of the monetary deficit and the budgetary deficit, net increase in the union government borrowing from the Reserve Bank of India. So the answer to this question will be A here. A is the definition of the fiscal deficit. जैसे कि हमने last question में भी देखा. So you can see how the UPSC is repeating its question. किस तरीके से UPSC repeat कर रहा है question को, and how after the alternate year 3-4 years the same kind of the question they are asking in the economy part. So that's become the more important for you ki how to analyze the question, how to see how a question is framed from the option in the previous year, किस तरीके से question derive हुए हैं from the option itself. So you can see here. Now let's move to the question number 7. Deficit financing mean, what's the meaning of the deficit financing here? Again it's a kind of the fiscal deficit. अगर deficit होता है उसको finance किस तरीके से government करती है, and this was again the question was asked in 2015 रिलेटेड टू कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किससे रिलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए. और डेफिसिट फाइनेंसिंग 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 1992 में भी क्वेश्चन पूछा गया. तो यू कैन सी हाउ दे आर अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस इज एन एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू. किस तरीके से एक्सेस करती है गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Now let's move to the question number 8. The fiscal crisis. Again, the definitions have become more important in the fiscal policy. Even is the fiscal stimulus, even is the fiscal deficit, even is the fiscal crisis. What's the meaning of these three and what's the difference between all these three? तो आपके लिए homework हो जाता है. You can mention in the comment section what's the meaning of it. What's the fiscal crisis? Fiscal crisis is the phenomenal increase in the external indebtedness. ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सटर्नल इंडेक्टनेस इंक्रीज हो जाएगा रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ थिंग, दैट्स आर नोन एज द फिस्कल क्राइसिस. तो इट्स अ डेफिनेशन, ये आपका रिपीट भी हो सकता है मे बी बिकॉज द गवर्नमेंट इज ब्रीचिंग द फिस्कल डेफिसिट टारगेट. तो कंटिन्यूसली हम वी आर गोइंग टू ए फिस्कल डेफिसिट कंट्री में हम कन्वर्ट हो रहे हैं. इट्स बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. नाउ लेट्स अगेन यू कैन सी डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दिस इज द 1987 क्वेश्चन एंड दिस इज द 1990 क्वेश्चन. तो इस तरीके से अगर इससे पहले का भी देखोगे 1992 में डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर से पूछा गया. 1990 में अगेन देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द deficit financing, and these are the same question the UPSC repeated in these years. So it's the government spend in excessive revenue. Next question पे आ जाते हैं. Question number 10. In the context of the governance, consider the following statements: increasing the foreign district investments inflow, privatization of the higher education institution, downsizing of bureaucracy, and selling, offloading the share of the public sector undertaking. Which of the above can be measured in the control of fiscal deficit? Selling, offloading the share of public sector undertaking, downsizing the bureaucracy, this can be steps. Privatization of the higher educational institution, yes, this can be done. Encouraging FDI, yes, this can be done. So answer of this question will be the 1, 2 and 3. So this is the second part of the fiscal deficit and we already covered the first part. तो आप इसको first part को भी देख सकते हैं the Edukemy YouTube channel. So we will meet in the next video. Till then you can prepare for the fiscal policy of the government and can attempt the same question. You can also join the Prelims support program that's starting from the 11th January and the CSET program is already started. तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. The link is given in the description below. So we will meet in the next video.